Hello everyone and welcome back to this very important video on the topic of granuloma formation. This entity which is called the granulomatous inflammation is probably one of the most important questions that you have to understand the basics of. Now ये बहुत लगता है लोगों के बहुत easy है ना? Because this is a very commonly and frequently encountered entity. तो पीपल थिंक दैट इज़ वेरी इजी, लेकिन क्या आपको पता है कि ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन कैसे होता है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन? डू यू नो दैट? Yes, we know the structure of granuloma. A lot of the students may be knowing this, but do you know exactly how a granuloma formation happens? Right? So this टॉपिक कम्स अंडर द चैप्टर ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, राइट, जिसमें आपको मैक्रोफेजेस के रोल्स के ऊपर पहले लिखा होता है, उसके बाद लिम्फोसाइट्स के बारे में लिखा होता है, एंड देन फाइनली यू आर डायरेक्टेड टू लर्न अबाउट ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन बिकॉज दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड कैसे ये बनता है एक पूरा प्रोसीडियर होता है जिसमें डिफरेंट सेल्स का पार्टिसिपेशन होता है. तो आई वांट टू मेक दिस टॉपिक super easy for you within a few minutes and you're going to take home a lot of important messages from this video, right? So without further ado, let's start with this topic. Now please understand that granulomatous inflammation is a chronic inflammation. ठीक है, तो इसमें क्या क्या सेल्स टेक पार्ट करता है? नंबर 1 एक्टिवेटेड मैक्रोफेज, नंबर 2 टी लिम्फोसाइट्स, नंबर 3 नेक्रोसिस. नेक्रोसिस होता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज इट, व्हाई इज इट फॉर्मिंग? इट इज बिकॉज देयर इज एन अटेम्प्ट, द सेल्स अटेम्प्ट to contain the offending agent that is difficult to eradicate. So are you understanding? मतलब किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन इफ द बॉडी इज नॉट एबल टू एलिमिनेट और इरेडिकेट, देन द बॉडी इज एक्चुअली ट्राइंग टू एटलीस्ट कंटेन दैट इन अ स्मॉल एरिया ताकि वो फैले ना पूरा बॉडी में. ठीक है. सो इट इज एन अटेम्प्ट टू कंटेन इट बाय एन इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस सो दैट इट डजंट एटलीस्ट स्प्रेड because it is not able to eradicate that organism out of the body. ठीक है, तो persistent infection और inflammation cases में ये formation होता है. Now there is a very strong activation of the T lymphocyte leading to macrophage activation. So here is an interplay between the T lymphocyte and the macrophage. Most important point that you have to take away is that interaction होता है two cells के बीच में. टू सेल्स के बीच में इंट्रैक्शन होता है. एक है टी लिम्फोसाइट, दूसरा है मैक्रोफेज. ठीक है. सो देयर इज एन एक्टिवेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट. फर्स्ट देयर इज एक्टिवेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स. द टी लिम्फोसाइट्स will activate the macrophage. This macrophage will cause injury to the tissues that will ultimately form the granuloma, right? Now, so what are these macrophages? How does they look? If I can just quickly take you to this image, are you able to see these activated macrophages? Right? And what are these? These are the epithelioid cells, right? And you have the lymphocyte, you have the fibroblast, and you also have the giant cells. So this forms all the components of a granuloma. I'll come back to this image. Just let me take you through some very basic points. What are epithelioid cells? मैंने अभी बताया है कि epithelioid cell के बिना किसी भी entity को granuloma नहीं बोल सकते. Epithelioid cell are the most important diagnostic point of identification of a granuloma. These are basically slipper shaped, they have a slipper shaped nuclei. ठीक है, थोड़ा सा इस तरह का सेल होता है जैसा आपको दिख रहा है इमेज में, बिल्कुल वैसा ही है. So they have abundant cytoplasm and they begin to resemble epithelial cells and are called as epithelioid cells because they resemble. So this is the activated macrophages, but they will ultimately become like this. ठीक है, and because they are resembling epithelial cells, they are not epithelial cells, they are activated macrophages converting into that, but because they resemble epithelial cells, that's why they are called as epithelioid cell. Please mark the spelling, it is epithelioid cell, right? So now these macrophages will fuse and that will give rise to multinuclear giant cell, which is another very very important component. So granuloma के अंदर आपको multinuclear giant cell भी मिलेगा. ठीक है. So now understand that there are two types of granuloma. बहुत बेसिक है, प्लीज अंडरस्टैंड. प्लीज डोंट हैव द कॉन्सेप्ट कि हर ग्रैनुलोमा में देर इज इम्यून रिस्पॉन्स. देर इज नॉट इन एनी इम्यून रिस्पॉन्स इन फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा. सो फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा में देर इट इज
incited by the inert foreign bodies which induce inflammation in the absence of T cell mediated immune response. A very very important takeaway point is that प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक कि यहाँ पर भी टी सेल का ही कुछ काम होता है. टी सेल का काम यहाँ पर नहीं होता है. ये एकलौता एक ग्रैन्युलोमा है जहाँ पे देयर इज नो रोल ऑफ एनी इम्यून रिस्पॉन्स. देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ कोर्स, देयर इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ कोर्स, बट देयर इज नो इम्यून मीडिएटेड पैथोजेनेसिस इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉरेन बॉडी ग्रैन्युलोमा, जो आपको हर दूसरे तरह के ग्रैन्युलोमा में आपको मिल जाएगा. ठीक है. सो वाई डज दिस फॉर्म? बिकॉज दिस इज फॉर्मिंग अराउंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक टेल्क, suture, fibers. So they are basically इतना large है that they are not able to get phagocytosed by a macrophage, and they are not immunogenic. They are not immunogenic, and that is why they are not inciting any immune response. The T cell mediated response, which is the hallmark, which is the basic of formation of granuloma, that is not taking place because it is non-immunogenic. Okay, so they do not incite any specific immune response. But our focus, this is very important to understand, but our focus is to see and understand the pathogenesis of how the normal granuloma formation occurs, because we have something very very important which takes place in tuberculosis, in sarcoidosis, right? So यहाँ पर जो microbes होते हैं, तो what is the process of formation of that granuloma? So these are called as immune granuloma. Why? Because here the immune system is involved, and which is that immune system? It is the T cell mediated response. ठीक है. यहाँ पर क्या होता है, exactly क्या होता है? यहाँ पर होता है that the T cells, there is activation of the T cells. Once the antigen presenting cells will present the microbe to the T cells, the T cell will get activated. I will show you the flow chart as well, but please understand that first there is activation of the Th1 cell. Th1, important to note, Th1 cell which will produce cytokines like interferon gamma, which will activate the macrophages. Now please understand and please see this, that once the ABC will present the microbes to the CD4 plus T cell, this will activate the macrophages. ठीक है. और ये macrophage जो अब activate हो चुका है, ये in turn will again activate the other Th1 cell, and there will be a vicious cycle going on. Are you understanding? So दो सेल के बारे में हमने बताया है, एक है टी सेल, दूसरा है मैक्रोफेज. दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, एक प्रोसेसिंग होता है जो एक विशियस साइकिल की तरह बन जाता है, एंड इवेंचुअली दिस इंटरेक्शन, दिस रिपीटेड इंटरेक्शन विल गिव फॉर्मेशन टू द ग्रैन्युलोमा. ठीक है. प्लीज नोट द एरोज. कैन यू सी दिस एरोज आर टुवर्ड्स दिस and these arrows are opposite, they are towards this, which means that the CD4 plus will activate the macrophages, the monocytes, the leukocytes, all of this by releasing of cytokines and interferon gamma. On the other hand, the activated macrophage will activate the T cell by formation of cytokines and like interleukin 12. ठीक है. तो यहाँ पर यही लिखा है that the macrophage lymphocyte interaction is basically what is given in this image. The activated T cell will produce the cytokines which will recruit the macrophages by the interleukin 17, by T1 necrosis factor, and all those things which will activate the macrophages. And these activated macrophages will in turn stimulate the T cell by formation of the interleukin 12, right? And these prolonged reactions involving the T cells and the macrophages will result in granuloma formation. Very very important point. Now the morphology. What are the points? बस पॉइंट्स याद रख लो, क्या क्या है ग्रैन्युलोमा में. इस फीचर को याद रख लोगे, इस इमेज को याद रख लोगे तो सारा ही पॉइंट्स याद में आ जाएगा. But I just wanted to mention again important thing. Epithelioid cell number 1, number 2 is lymphocyte, number 3 is giant cell, number 4 is activated macrophage, and number 5 is fibroblast. ठीक है. तो सारे ही पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है. Now these giant cells, what are these giant cells? These are basically Langerhans giant cells. I have seen a lot of students making this mistake. It is Langerhans, it is not Langerhans. ठीक है. What is Langerhans and what is Langerhans? Langerhans तो ये ठीक है आंसर है. What is Langerhans? अगर हो सकते हैं तो मेरे को बताना इस आंसर को कमेंट में कि what is Langerhans. That's a different cell. ठीक है. Anyway, so now this will be also having a caseous necrosis. It may have, it may not have. Now what are the non-caseating entities? It is Crohn's disease and sarcoidosis. Very very important. यहाँ पर मैंने एक टेबल भी दिया हुआ है जो आप एक बार देख लेना. ठीक है. I wanted to highlight the point that cat scratch disease is having a ciliate granuloma. Okay, and this is the image. ये ऐसा दिखता है हिस्टोमेट. ठीक है. So this is how it is arranged. The Langerhans giant cell में जो न्यूक्लियाई है वो ऐसे अरेंज होता है in the shape of a horse shoe.
ठीक है। तो हॉर्स शू पैटर्न में इसको हम बोलते हैं हॉर्स शू न्यूक्लियर और हॉर्स शू पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियर इन द 2 पोल्स दे आर अरेंज्ड। जब मैं बताऊंगी इसको तो सी दिस इज बेसिकली द लैंगहैंस हाउ इट इज इन द हॉर्स शू शेपेड पैटर्न। सो दिस इज सीन इन केस ऑफ टीबी। ये तो एकदम ही टीबी में ही मिलता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कांट राइट जाइंट सेल में if you get Langhans, you have to write TB. You cannot write it, you cannot label it as osteoclastoma. You cannot label it as your giant cell tumor. That is different. In giant cell tumor, in osteoclastoma, you're going to get osteoclastic type of giant cell, but not Langhans giant cell. तो Langhans सिर्फ मिलता है TB में ही मिलता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। सो एनीवे वी आर कमिंग बैक टू दिस एंड जस्ट अ रिकैपिचुलेशन ऑफ द फ्लो चार्ट दैट I've explained just now, that antigen is taken up by macrophage and presented to the CD4 plus helper T cells. These CD4 plus T cells will get converted to the TH1 subtype. They will get converted to the TH1 subtype, and this will in turn secrete interleukin 2 and interferon gamma, which will activate the macrophages, and these will in turn secrete the tumor necrosis factor alpha. By this entire interaction, this formation of the granuloma. Now different types, you must be knowing this: non-caseating, caseating, foreign body where there is absence of T cell response, then immune granuloma like in Wegener's and all, and then you have the ciliary granuloma in case of Katz's disease, right? So now a bit about the giant cell, बहुत ही easy है। You have physiological giant cell, you have pathological giant cell। Physiological में you have the osteoclast, you have syncytial trophoblast, you have the megakaryocyte। These are examples of physiological giant cell, बहुत important है, ठीक है। osteoclast, syncytial trophoblast, megakaryocyte, these are the 3 examples of physiological giant cell। Pathological में आपको क्या क्या मिलने वाला है? You have the foreign body kind of a giant cell in which many nuclei in cytoplasm, ठीक है। This is basically the osteoclastic giant cell जहाँ पे more than 100 nuclei present है, mainly present in the neoplastic lesions as I mentioned. So this is the osteoclastic type of giant cell, so don't mix the two, okay? Then you have the Langhans, which I already talked about. Next you have the Taunton, in which you have the ring of nuclei around a central eosinophilic homogeneous area surrounded by foamy cytoplasm. It is present in xanthoma or fat necrosis. Next you have the anaplastic kind of giant cell. This is pleomorphic, you have hyperchromatic nuclei, very likely malignancy, okay? Next you have the Warthin-Finkelty giant cell, which is present in the viral infections in cases of measles, in Kimura disease, etc. It's also an example of giant cell. Another example, very important, is the Reed-Sternberg cell, which is seen in the Hodgkin lymphoma. So I guess this is it. Very important, रिविजन करना, इसको याद रखना है, इसको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इस तरह के इस डायग्राम को आपको याद रखना है, और जो मैं लिखा है, जो फ्लो चार्ट में बनाया हुआ है यहाँ पर, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम मी टुडे। आई विल टेक यू लीव टुडे एंड मीट यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।